Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 12th. Today we are going to study various terms such as Mediterranean agriculture, market gardening and horticulture, truck farming, cooperative farming and collective farming. तो पहले हम देखेंगे कि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होता है. मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर. It is practiced in the countries on either side of the Mediterranean Sea, in Europe and in North Africa, from Tunisia to Atlantic coast, southern California, central Chile, southwestern parts of South Africa, and southwestern parts of Australia. This region is an important supplier of citrus fruits. It can also कि यमन कंट्रीन हुन में नावन यमन कंट्रीन मजन यम जना मेडिटेरियन सीस अंत पक यम कंट्रीज छ अमन मजन युस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने यमान छ दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन एग्रीकल्चर. तो अथ मजन छ ज्यादा पहमत सिट्रस फ्रूट्स यमान वबदावन तो बे छ अति ज्यादा पहमत यमान विटिकल्चर या इट इज कॉल्ड ग्रेप कल्टीवेशन is a specialty of Mediterranean region. Best quality of wines in the world with distinctive flavors are produced from high quality grapes in various countries of this region. यथ रीजनस मजन मेडिटेरियन रीजनस मजन ज्यादा पहमत यमान विटिकल्चर तो बे सिट्रस फ्रूट्स यमान वबदावन. विटिकल्चर गई दच वबदावन थदिस पैमानस पे बड़िस पैमानस पे दच वबदावन ये दैट इज कॉल्ड विटिकल्चर. अम पत वुचान मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर द अर्बन मार्केट्स. यथ मजन फ्लावर्स, फ्रूट्स तो क्रॉप्स इन वबदान ताकि तम इन अर्बन मार्केट्स मजन पतो सोजन. That is called market gardening or horticulture. Farmers are small and are located where there are good transportation links with urban center where high income groups of consumers are located. It is both labor and capital intensive and lays emphasis on use of irrigation, high yielding varieties of seeds, fertilizers, insecticides, greenhouses and artificial heating in colder regions. This type of agriculture is well developed in densely populated industrial districts of northwest Europe, northeastern United States of America and Mediterranean region. The Netherlands specialized in growing flowers and horticulture crops, especially tulips, which are flown to all major cities of Europe. इत कन वो कि यथ मार्केट गार्डनिंग मजन मुख्तलिफ किस्मिक फल यमान वबदान. बे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अथ मज हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ग्रीन हाउसेस एस्टेब्लिश कर इंस्टॉल कर मजन क्रॉप्स वबदान यम फ्रूट्स वबदान बक चीज वबदान तो यूरोपस मजन तो मेडिटेरियन रीजनस मजन सप्लाई कर. The region where farmers specialize in vegetables. ब्याक एग्रीकल्चर एक्टिविटी यथ मज सिर्फ वेजिटेबल्स यातन वबदान. चूंकि यथ एरिया मज सिर्फ वेजिटेबल्स वबदान या यथ एक्टिविटी मज सिर्फ सब्जी वबदान दैट इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली. The farming is known as truck farming. The distance of truck farms from the market is governed by the distance that a truck can cover overnight. Hence the name truck farming. चूंकि vegetables यम वली खराब गसान
यम वल सड़ान अगर जना यम वक्तस पे फार्म पे मार्केट्स तक वातनान यन क्योंकि यम फार्मस यमन मज यम वेजिटेबल्स वपदान यम तमन एरियान मन यत नजदीक पत मार्केट फैसिलिटी क्योंकि यम ट्रकन मज बरन यम वेजिटेबल्स तो अक्सी रातस मन गसन यम वातन फ्रॉम फार्म अप टू मार्केट या मंडी तक गसन यम वातन विदिन ए नाइट अक्सी रात मज ताकि सुबह सुबह वातन मार्केट्स मन तो यमन गस बूल तत यह गस कंज्यूम दस्ती तो यह हेक खराब गसित की तो युस डिस्टेंस अख ट्रक अकिस रात मज कर कवर तो अत फार्मिंग युस फार्मिंग करान वेजिटेबल फार्मिंग इट इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग तवे अत नाव पेमुत ट्रक फार्मिंग ताकि यह ट्रकन हंद जरिए फील्ड पे अक्सी रात मज गस वातन ट्रकन हंद जरिए अत मार्केटस मंडी तम तो यह गस तिथि डिस्टेंस यह डिस्टेंस मज ट्रक अकिस रात मज हे वातन तिथि डिस्टेंस पे गस वपदान यून तो तवे अत वन ट्रक फार्मिंग इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग a modern development in the industrial region of Western Europe and North America is factory farming. Farming that is called factory farming. Livestock, particularly poultry and cattle rearing, is done in stalls and pens, fed on manufactured foodstuffs and carefully supervised against disease. This requires heavy capital investment in terms of building machinery for various operations, veterinary services, and heating and lighting arrangements. One of the important features of poultry farming and cattle rearing is breed selection and scientific breeding. Types of farming can also be categorized according to farming organization. Farming organization is effected by a way in which farmers own their farms and various policies of the government which help to run these farms. Cooperative farming to collective farming. Cooperative farming a group of farmers form a cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming. Individual farmers remain intact and farming is a matter of cooperative initiative. Cooperative societies help farmers to procure all important inputs of farming, sell the products at the most favorable terms, and help in processing of quality products and at cheaper rates. Cooperative movement organized over a country ago and has been successfully in many Western European countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy, etc. In Denmark, the movement has been so successful that practically every farmer is a member of cooperative. The cooperative farming मदन च वुचान वारिया group of farmers च collectively यस पनन resources लगावान तो पत यम अख सोसाइटी अख बनावान यथ मन यम पत फार्मर यम प्रोडक्ट्स हेवान च तो यम च पत कनान वातनावान जैसे मार्केट्स तम इत कनन च यम सोसाइटीज the important role play karan in agricultural activities. Collective farming the basic principle behind this type of farming is based on social ownership of the means of production and collective labor. Collective farming or the model of kolkhoz was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the efficiency of the previous methods of agriculture and to boost agricultural production for self-sufficiency. The farmers used to pool in all their resources like land, livestock and labor. However, they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirements. The collective farming
तमाम फार्मर्स ये सिस्टम ओस आमुत रशिया मज ट्रेडिशनल सिस्टम सह चेंज कर बापत आ तति ये कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर यथ मन सारी फार्म लूख जमीन आसान सो सोर जमीन तम कलेक्टिवली कल्टिवेट करान ताकि प्रोडक्शन नेर सु पत गवर्नमेंट्स कुन दिन सु कन्न तो तमिच इनकम गज गवर्नमेंट्स कुन तो जन अमन थोड़ा बहुत पान खतर जमीन कह टुकर दिन यथ मन पन्ने गुजार खतर कह वपदावान। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।